हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो अब हम सॉल्व करेंगे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व प्रॉब्लम विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 35। सो द क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसका हमने एक सॉल्व प्रॉब्लम प्रीवियस वीडियो में देखा था एग्जाम्पल के फॉर्म में। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल्स टू 0। Okay, this question we have to solve by factorization method. So factorization method में हम एक्चुअल में करते क्या हैं? This is the standard form of our quadratic equation. It is ax square plus bx plus c equals to 0. Here a equals to we have 1, a equals to we have 1, b equals to we have minus 14 एंड c इक्वल्स टू वी हैव 13। ओके, सो हमको इस माइनस 14 के फैक्टर करना है, माइनस 14 को फैक्टराइज करना है ऐसे कि जिसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए माइनस 14, और उसका जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किसके बराबर आना चाहिए a और c के प्रोडक्ट यानी 13 × 13 के बराबर, इतना आना चाहिए 13। ओके, सो हमको 14 के फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, सो 14 के फैक्टर कैसे बनाएंगे हम? सी सो हमको 14 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसका फैक्टराइजेशन हमको ऐसा करना है जिसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन माइनस 14 आना चाहिए और जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 13। सो इफ अगर हमने इसको ऐसा कर दिया 13 में और 1 में डिवाइड कर दिया। ओके, सो माइनस 13 माइनस 1 इज माइनस 14। अगर हम इसका एडिशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस 14, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 13 इंटू माइनस 1 इज 13, माइनस माइनस प्लस एंड 13 1 इज 13, एंड एडिशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है माइनस 1 माइनस 13 इज माइनस 14। दैट मीन्स इसको हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। सो फैक्टराइज कैसे की हमने माइनस 1 एंड माइनस 13 में। सो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन वी हैव आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल्स टू 0। सो इस 14 को हमने फैक्टराइज किया है। हाउ? m स्क्वायर माइनस माइनस m 1m minus 1m is nothing but m minus 13m plus 13 equals to 0. See, minus 1m minus 13m is minus 14m, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13 इंटू 1 इज 13 एंड m इंटू m इज m स्क्वायर। ओके, सो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कॉमन m, here we have m also and here also we have m, so we will take m common. So यहाँ पर m square है, that means m into m, 1m we have taken common, that means there will remain only 1m minus m already यहाँ पर आ चुका है, then we will have minus 1 only, so minus 1. So same factor we have to write here m minus 1. सो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम m माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा 13,
ये हो जाएगा 13, नेगेटिव 13. So negative 13 into m is negative 13m. Negative 13 into negative 1 is plus 13 equals to 0. So again we have m minus 1 is common. So we have to write m minus 1 and what will remain here? m minus 13. m minus 13 equals to 0. So एक बार हम m minus 1 लेंगे and then second time we will take m minus 13, then we will get two answers. So now m minus 1 equals to 0. So what will be m? M equals to, if we will transfer this to another side, will become positive 1. So this is our first root of quadratic equation. Now if we will take m minus 13 equals to 0, so we will get m equals to 13. So this is the second root of quadratic equation. So we have both the root of quadratic equation, that means we have the answer. So we have to write result. So what will be result? The roots of quadratic equation is, we have m equals to, what we have m equals to? 1 and 13. So we have to write 1 and 13. So this is the answer. Okay. So by factorization method, the questions to solve is very easy. Just you have to know how we have to calculate or we have to factorize this b in such that its addition and subtraction will become equals to b and their multiplication or division becomes equals to product of a and c. Okay. So if you want to write, you can write. So now we will solve the second problem. Second example. Second example, we have 3x square minus x minus 10 equals to 0. So this is the quadratic equation. Here we have b equals to minus 1. Here we have minus 1. A equals to, we have 3x square. So we have to take only coefficient, that is 3, and c equals to, we have minus 10. So b को हम ऐसा फैक्टराइज करेंगे जिसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए? b के बराबर, और जिसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कितना आना चाहिए? a इंटू सी के बराबर. Okay. So what is b? It is 3, no, 1. And what is a into c? A into c is, a into c is, what is a? We have 3 into what is c? We have minus 10. So that will be minus 30 आना चाहिए. b को फैक्टराइज करेंगे जिसका एडिशन सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए? 1 के बराबर, और उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? ए और सी के, नहीं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन माइनस 30 के बराबर आना चाहिए. सो सी वी हैव 1 और वी हैव माइनस 1. सो इफ इसके फैक्टराइज हमने किए 6 and 5. 6 and 5. So 6 5s are 30 and 6 का साइन हमने दे दिया नेगेटिव. सो नेगेटिव 6 minus 5 इज minus 1. सो minus 1 आ रहा है और इनका जो प्रोडक्ट कितना आ रहा है? नेगेटिव 30. सो दिस विल बी आवर फैक्टर फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो minus 6x, so we can write here minus 1x, that is minus x, is minus 6x and 5x. Then it will become minus 30x square. Okay. So now we will have to solve. We have our factor, that means we have to solve this question very precisely. So solution now. So what is our question? It is
the 3x square minus x minus 10 equals to 0. So we have to divide this. So we can write 3x square minus 6x plus 5x minus 10 equals to 0. So there are two pairs we have. So we have to take common from each pair. So here we had 2 into 3 is 6. That means here we can take 3 common. We have x here and x here also. So we can take common 3 into x, that is 3x. So 3x हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया. अब यहाँ पर क्या बचेगा, 3 तो बाहर निकाल लिया है. अब यहाँ पर x स्क्वायर का x भी बाहर निकल गया. दैट मीन्स वी है ओनली x माइनस 3 इंटू 2, इट इज 3 इंटू 2. तो 3 से हमने बाहर निकाल लिया है और x भी बाहर निकाल लिया है. सो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 2. सो वी हैव टू राइट 2 हियर. सो सेम द फैक्टर विल बी कम हियर, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट दिस. सो 5 प्लस 5 इंटू एक्स इज 5x and plus 5 into minus 2 is minus 10. Okay, so x minus 2 we have common, so we have to take common x minus 2. So what will remain here, 3x plus 5. 3x plus 5 equals to 0. So we will take once x minus 2 equals to 0 and another time 3x plus 5 equals to 0. Then we will get two roots of the quadratic equation. So we have to divide this portion into two parts. One is for x minus 2 equals to 0. So x will be 2. So this is our first root of quadratic equation. If we will take 3x plus 5 equals to 0, so 3x equals to minus 5. प्लस 5 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा. सो x निकालना है तो 3 को ट्रांसफर करना पड़ेगा. दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 5 डिवाइड बाय 3. So this is the second root of quadratic equation. So अब हमारे पास दोनों quadratic equation के roots आ गए. That means we have the solution. So we have to write answer here. That is result. So what is the result? The roots of quadratic equation. The roots of quadratic equation, that is x equals to, we have 2 and we have minus 5 by 3. So this is the answer. So really quadratic equation को factorization method से solve करना is very easy. Okay, so if you wanna write, you can write here. So we will solve the next problem. We have next example, that is third, and which is given in your textbook page number 36. It says 3y square equals to 15y. 3y square equals to 15y. So we have to solve this. So it is quite different from the regular quadratic equation that we have solved. So solution. So first we have to transfer this to another side. So we have 3y square equals to 15y is our equation. If we will transfer this, it is in positive form, will come in negative form. So we can write 3y square minus 15y equals to 0. Okay, so here we have or we can write this as 3y square minus, here we have 3 into 5y, here we have 3 into 5, that means 15y equals to 0. So we have 3 common here, we have 3 common here, we have to take 3 common. Here we have y and y square means y into y, that means we can take 3y as a common.
into what will remain here, 3 we have already taken, y we have already taken, it will remain only y minus 3 and y हमने कॉमन ले चुका है, वहाँ पर क्या बचेगा, ओनली 5, so equals to 0. So we will take this first and then this one. So 3y equals to 0. So y equals to 0 divided by 3. That means y equals to 0 is our first root. What will be second root? We have y minus 5 equals to 0. So y equals to minus 5 will become plus 5. So plus 5. That means 5. So these are the two roots of the given quadratic equation. So result. So what will be result? The roots of quadratic equation 3y square equals to 15y is, we have y equals to, the first root is 0 and second root is 5. So this is the answer. Okay, so here we have completed, we have one more solved problem that we will solve in our next video. So on that basis we have some homework for you. So from the practice set 2.2 I have given you 3 homework yesterday, that means in our previous video. So आज आपके लिए homework है 4th, 5th and 6th, and one more activity which is given in next problem. No, this activity we had to conduct. Then 8th, then 9th one, 9th वाला भी आपको होमवर्क है, 10th, 11th और 12th. ओके, सो आपको मैं सॉल्व कराऊंगा 6th वाला, 7th वाला. सो 6th, 7th और 8th. सो 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे के सारे आपके लिए होमवर्क है. वो इसीलिए होमवर्क वो मैं सॉल्व कराऊंगा बिकॉज दे आर इन रूट फॉर्म. अब रूट के कैसे फैक्टराइज करेंगे वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. सो आज के लिए इतना ही. सो प्लीज़ आप अपना होमवर्क टाइम पे कीजिए और मुझे डाउट डिस्कशन के लिए कोई भी कॉल नहीं आ रहे हैं, है ना. सो बेटर है कि अगर आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको डाउट आते हैं, सो यू कैन कॉल मी बिटवीन 4 to 6 PM, ओके, इन द इवनिंग. सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग एज. ओके.